to cover all these 4 concepts. Okay, so ये concept कुछ इस तरह है. Comparing the number. Comparing number बहुत important topic है. Okay, bigger and smaller number. ये कैसे identify करना है, इसका बहुत अच्छा easy trick मैं आपको बताने वाली हूँ. Okay, the symbols we are using for comparing the number. This is very interesting. Okay, and exercise for practice. अब हम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. So this is part 5 of the chapter number 2. Okay, now in this chapter, in this video, we are going to learn comparing number concept. What exactly the comparing number means. Okay, so comparing number का meaning होता है, अगर मेरे पास कुछ just we have learned pre number concept in the chapter number 1, right, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है. In that we have learned pre number concept, more and less. Do you remember that Chiku monkey, Chiku and Piku? चीकू के पास ज्यादा बनाना थे, पीकू के पास कम बनाना थे. So we are saying it as a more and less, right? But यहाँ पर हम वो more and less को भी एक number देने वाले, and that number if it is smaller we will say it as a smaller. If the number is bigger तो हम उसे big बोलने वाले या फिर bigger बोलने वाले. ठीक है, so now see, we already know this is our number strip. Okay, so now look at the number strip carefully. यहाँ पर 0 to 20 numbers लिखे हैं number strip के ऊपर, right? And now the numbers that are very close to 0 are smaller number. 0 के पास जितने ज्यादा, जितना पास number होगा वो उतना small होगा. Okay, so now we can say 1, 2, 3, 4, 5. These are smaller numbers, right? And the number that are very farther away from 0 are bigger number. If we consider this number 15, okay, तो ये 15 bigger number है. Okay, लेकिन अगर मैंने बोला 1, तो 1 ये स्मॉल नंबर है. क्यों? क्योंकि ये 0 के पास आ रहा है और 15 बहुत दूर है ना, 20 उससे भी ज्यादा दूर है, तो वो बिगर नंबर हो जाएगा. ठीक है, चलिए नाउ वी विल जस्ट सी दिस. फॉर एग्जांपल इफ वी कंपेयर 5 एंड 7. ओके, अब ये नंबर 5 है और ये 7 है, तो पास में कौन सा है? विच इज मोर क्लोजर टू नंबर 0? 0 के ज्यादा क्लोज कौन सा है, 5 या 7? Yes, number 5 is closer. So we can say 5 is a smaller number. Okay, because it is closer to 0 as compared to 7. 7 के comparison में number 5 ज़्यादा closer है, and that is the reason 5 is smaller than 7. Similarly 17 is bigger than 14. अगर हमने 17 and 14 को compare किया, ये 14 है और यहाँ पे ये 17 है. अगर मैंने बोला कि 14 कौन छोटा है या 17 छोटा है, so how to understand? 14 is more closer to 0 as compared to 17, and hence we will say it as a 14 is smaller than 17. Do you understand? Let's have one exercise. Color the box with the smaller number. अब हमें क्या करना है? Smaller number को color करना है. ठीक है, now the exercise is, see, these are the number 14 and 15. अब इसमें smaller number कौन सा होगा? जो 0 के ज्यादा पास होगा. The number which is closer to 0 is a smaller number, right? So let's check first of all numbers on the number strip. ये हमारी number strip है, इस पर है ये 14 और ये है 15. इन दोनों में ज्यादा close कौन सा है? Yes, you are right, 14. So we will color this 14 as a yellow, okay, because this is a smaller number, right? Now next question is 13 and 20. 13 and 20 में छोटा कौन सा होगा? Yes, you're right. 13 ये ज्यादा पास है. It is more close to 0 as compared to this number 20, है ना? So 13 is smaller than 20. So we colored it as a yellow, okay? चलो, now the next exercise is color the box with a bigger number. ऐसे नंबर हमें कलर करने हैं जो बिग हो गए, ओके, एज कंपेयर टू द अदर नंबर. ओके, सो द टू नंबर्स आर 18 एंड 20. अब हमें क्या करना है? छोटा नंबर नहीं, वी डोंट हैव टू कलर स्मॉलर नंबर, वी हैव टू कलर बिगर नंबर. सो हाउ टू आइडेंटिफाई बिगर नंबर? द नंबर विच इज फार्दर अवे फ्रॉम 0. जो ज्यादा दूर होगा ना 0 से, वो हमारा बिगर नंबर होगा, राइट? So if I consider number 18 on a number strip, it is closer as compared to 20. It means 20 18 के comparison में थोड़ा सा दूर है 0 से, है ना? So we can say 20 is a bigger number, okay? And hence we colored it as a blue, okay? Now let's take another example. So numbers are 10 and 8. Now see, this is number 10 and this is number 8 on number strip. तो इसमें जो बड़ा number है वो कैसे identify होगा? So how to identify bigger number? The number which is farther away from number 0, that we are going to say it as a bigger number. Okay, so if I consider 8, 8 is closer to 0 as compared to 10. 10 is farther away from number 0 as compared to this 8. So we can say 10 is a bigger number. Okay,
Now the next is symbols for comparing number. Now we know कि 10 and 8 में 10 बड़ा number होता है, 10 is a bigger number, right? But how to say? हम हमेशा तो कलर नहीं कर सकते, right? So here we will put some signs, and these signs are really very interesting. बहुत अच्छे signs है. Okay? Now see, for greater number we use a symbol B. अगर पहला नंबर greater होता है दूसरे नंबर से, okay? Then we use for greater than we will use this symbol. This is the symbol. Okay? And if the number is smaller, first number is smaller than the second number, then we will use this number. Okay? In short, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो number है बड़ा, वहां पे ये जो bird का, for example, if we are saying duck, so duck is having a shape like this, and it is doing like this, quack 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 quack. तो ये V shape आ रहा है ना दोनों हाथों के बीच में. तो ये क्वैक का जो माउथ है ना डक का, ये कहां पर खुलेगा? जो नंबर बड़ा होगा उसी के और खुलेगा ये माउथ का, डक का. ओके? सो इफ दिस साइड नंबर इज बिग, आई विल कीप इट लाइक दिस. इफ दिस साइड नंबर इज बिग, आई विल कीप इट लाइक दिस. ओके? सो अगर मुझे बोलना है पहले वाला नंबर दूसरे से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 10 इज ग्रेटर देन 5, तो मैं ये सिंबल पुट करूंगी. इफ द नंबर आर 10 and 20, so I will say 10 is smaller than 2. Okay? And now the symbols look like the open beak of a bird or the open mouth of a fish. They always open towards the bigger number. I told you just now, right? Remember these signs. Okay, this is very important. अगर मुझे बोलना है पहले वाला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, the first number is greater than the other next number, so I will put this sign. Okay? This beak or this sign will be having open aim towards bigger number. तो वो या एक इस साइड पे हो या उस साइड पे हो, हमें वो जो साइन है वो उधर ही ओपन करना है जो नंबर बड़ा होगा. The number which is bigger, that towards that we will keep the sign open. ठीक है? चलिए. Now this is a sign for smaller than. अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा होता है ना, तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं. ओके? अब ये अगर इस साइड में ओपन है, इसका मतलब है ये इस साइड पे जो कोई नंबर होगा वो बड़ा होगा, है ना? चलिए, now we will just do revision. So these are the number 15 and 5. We know अगर मेरा जो नंबर मेरे जीरो के पास आता है, the number which is coming closer to zero, that will be smaller number. The number which is farther away from zero, that will be bigger number, right? So 5 मेरा क्या है? बहुत पास है as compared to number 15. 15 as compared to 5, it is farther away, right? So 15 is a bigger number. So sign will be, the sign will come like this, right? यहाँ इस नंबर के ऊपर वो ओपन होगा लाइक दिस. दिस इज बिगर नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर. ओके? सो साइन विल कम लाइक दिस. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ओके, नाउ टेक योर नोटबुक विथ यू. अब जो एक्सरसाइज हम यहाँ पे करने वाले हैं वो पहले ही आपको करने हैं. ओके? वीडियो पॉज करना है एंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे वीडियो में देख के रीचेक करना है कि भाई मेरा आंसर ये राइट है या नहीं. ओके? मतलब आपका. ओके? चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर नंबर 7 and 4. तो अगर मुझे 7 and 4 कंपेयर करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. ओके? सो अ नंबर विथ मोर नंबर ऑफ डिजिट्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नंबर विथ लेस नंबर ऑफ डिजिट्स. ये एक छोटा सा ट्रिक है आपके लिए. ओके? हमने देखा था डिफरेंस डिजिट्स एंड नंबर में. ओके? इसी चैप्टर में पार्ट 1, 2 में हमने ये डिफरेंस देखा है, राइट? तो अब 7 में कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट है. 14 में कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट है. 1 and 4 है ना? तो जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर बड़ा होगा. इवन यू डोंट हैव टू चेक कौन सा जीरो के पास आ रहा है, कौन सा जीरो के बहुत दूर आ रहा है, ये भी चेक करने की जरूरत है. ओके? दिस इज अ स्मॉल ट्रिक. सो हियर 7 is a single digit number and 14 is a 2 digit number. So 14 is greater than 7. ओके? तो हम कैसे लिखेंगे? 14 is greater than 7. ग्रेटर का साइन एक बार चेक कर लेना है आपको. ये ऐसा साइन होगा, जो बड़ा नंबर है वहां पे आपको ये साइन पुट अप करना है. ठीक है? चलिए, now we are going to check compare between 18 and 19. Now see, this is quite interesting. यहाँ पर दोनों भी 2 digit number है, right? अब आप चेक कर सकते हो with the help of your number straight. Okay? If the number of the numbers of digit in the numbers which are given to you in the question are same. Okay? तो क्या करना है? Start comparing from 10th place. पहले तो देखो 10th place पे कौन सा नंबर है, तो दोनों नंबर में 18 and 19 में which is on the 10th place? करेक्ट, नंबर 1 ही है, मतलब दोनों में सेम है ना? नाउ if these are same, if the digits in the 10th place are same, then compare the digit on the 1st place. अगर 10th place का digit सेम है तो हम कहाँ पे जाएंगे? 1st place के digit पे जाएंगे. ठीक है? So here once on 18 1st place number is 8 and in the 19 1st place number is 9, है ना?
तो अगर मैंने बोला कि 8 नंबर जो है ये मेरे एज कंपेयर टू नंबर 9 इट इज स्मॉलर, राइट? तो क्या हो जाएगा, 8 इज लेस देन 9, सो 18 इज लेस देन 9। ये मेथड है कंपैरिजन की। तो मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, अगर दोनों नंबर सेम डिजिट के होंगे, जैसे कि 18 एंड 19, 18 में भी 2 डिजिट है, 19 में भी 2 डिजिट्स है, both numbers having 2 digits, right? So what we are going to do, first of all we will check the number which is present on the tens place, ठीक है? On the tens place we will check. Now in 18 and 19 on the tens place the number is 1 itself, okay? So we can't compare the tens place number, so we are moving on the ones place number. In the 18 ones place number is 8, right? And in the 19 number ones place number is 9. Very good. So if we consider 8 and 9, number 8 is closer to 0 as compared to 9. And we know the number which is closer to 0 will be smaller number, right? So we can say 18 is smaller than 19. Okay. So how to write this? 18 is smaller than 19 because 19 दूसरी साइड पे लिखा है ना? तो इसे रीड भी ऐसे ही करना है, आप ऐसे नहीं बोलोगे 19 is greater than 18। अगर 19 पहले होता क्वेश्चन में तो ही आप ऐसे पढ़ सकते हो, ओके? अब इसे पढ़ना कैसे है? 18 is smaller than 19। Do you understand? Because smaller number क्वेश्चन में पहले आया है, okay? That's why we are reading like this, ठीक है? चलिए, now when two numbers are having equal value, अगर दोनों नंबर में इक्वल इक्वल ही आ रहा है, then we are say it as a equal। इक्वल का साइन होता है दो स्लीपिंग लाइन एक के ऊपर एक, two sleeping lines are one above another, okay? It is a sign of equal। For example, if question is compare number 2 and 2, तो 2 2 दोनों साइड पे 2 2 है, मतलब दोनों साइड पे इक्वल इक्वल है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, no number is bigger, no number is smaller, right? So we will say it as a equal। this is a sign of equal, two sleeping line one above another, okay? above मैंने बोला है, above का मीनिंग होता है ऊपर लेकिन without touch। do you understand? चलो, now we are going to do one exercise, okay? Fill in the blanks with these three signs, one is greater than, smaller than and equal to। how to read this? greater than, smaller than और इक्वल टू, ये साइन आपको पुटअप करने हैं इस क्वेश्चन में, ओके? तो ये आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लेना, ये नंबर आपके नोटबुक में लिख लेना है आपको, एंड राइट डाउन योर आंसर, ओके? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एक्सरसाइज यू कैन रिस्टार्ट द वीडियो। मैं अभी इमीडिएटली इसके आंसर आपको बताने वाली हूँ, सो यू कैन चेक विद द आंसर यू हैव मेंशन इन योर नोटबुक, ओके? चलो, नाउ 7 and 9, so which is bigger number? We have to think like this, which is bigger number? We don't have to think like which is smaller number, always remember you have to think like which is bigger number। so if we say 7, 7 is closer as compared to 9 to the number 0, 0 के ज्यादा पास 7 है ना? तो ये 7 छोटा होगा, so we will say it as a 7 is a smaller than number 9, okay? ये greater number की तरफ ही ये V shape open होगा। जो bird है, बेबी डक है ना, उसका जो क्वैक होता है वो कहां पर ओपन होता है? टुवर्ड्स द बिगर नंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ओके? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 and 2। यहाँ पे दो नंबर है 20 and 2, राइट? तो 20 and 2 में हमें कंपैरिजन करना है। सो लॉजिक इज रियली वेरी सिंपल, हमने अभी देखा है जो नंबर सिमिलर डिजिट नहीं होंगे उसमें जो ज्यादा डिजिट वाला नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, राइट? तो यहाँ पे 20 में 2 डिजिट है और 2 में सिर्फ एक ही डिजिट है ना? So 20 is greater than number 2. This is the right answer. Okay. 20 is greater than 2. 7 is smaller than 2. You should not say like 9 is greater than 7. ये ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, okay? जो जैसे आपको नंबर दिए हैं वैसे ही आपको रीड करना है, ठीक है? चलिए, now we are going to learn 3 and 12। 3 and 12 में कौन सा नंबर बड़ा होगा? So already we have seen this type of problem in the previous second example, right? So how many digits here? Only one. How many digits are here? 2. So obviously 12 is greater. So how to write the sign? Sign will be like this. Okay, and how to read? 3 is smaller than 12. Okay, ये smaller का sign है और ये greater का sign है ना? चलो, 5 and 5, both side there are 5, so we will put a equal sign here, right? We will put a equal sign here, right? So 5 is equal to 5. इसे read कैसे करना है? 5 is equal to 5. Okay, चलो, now the next is 14 and 15। compare tens place because both side there are 2 digit number, है ना? पहले में क्या था? 1 digit and 2 digit था, इसलिए हमने easily compare करके छोड़ दिया, right? but अब यहाँ पे क्या हो रहा है? there are 2 digit on both side, so ones place tens place there is a 1, here also 1,
So no need to comparison. 1 is equal to 1 itself, right? Now we are going to move on ones place. Ones place, here is a 4 and here is a 5. So 4 is smaller than 5, right? So we will say 14 is smaller than 15. Again, there are 2-digit number on both sides. So first of all, we will compare with the tens place number. So who is a tens place number on number 10? Correct. Answer is 1. And who is a tens place number on number 22? So 1 is greater than 2 or less than 2? Very good. 1 is less than 2. तो यहाँ पे क्या होगा? No need to move on ones place also, क्योंकि tens place पे ही हमारा decision बन गया है ना? So we will say 10 is smaller than 20 and the sign will come like. Thank you so much for watching. If you like this video, please subscribe to get more videos like this. Happy learning!